Good morning, students. Today we are going to start our chapter 5th, that is magnetic field and magnetism. This is your first article, that is current loop as a magnetic dipole. All of you know what is a current loop? A loop through which current is passing, that is known as a current loop. First, our article is that whenever a current loop is suspended in a magnetic field, it acts as a magnetic dipole. Now we will take either a current carrying coil or a current carrying solenoid. Then what we will do? We will suspend that coil or solenoid in the magnetic field. Now that coil or solenoid will behave as a bar magnet inside the magnetic field. Now the first point in this article is whenever a current carrying solenoid or coil is suspended in a magnetic field, it acts as a bar magnet. That is, it induces two poles on it. One pole is the north pole and second is the south pole. Now we have studied earlier that whenever a current carrying loop is suspended in a magnetic field, it will experience a torque. The torque on it will be given by tau is equal to IAB sin theta. Now here tau is the torque acting on it, I is the magnitude of current flowing through the loop, A is the area of the loop, B is the intensity of magnetic field, and theta is the angle between the loop, that the direction of current and direction of the magnetic field. Now you have done earlier in the chapter 1 in electrostatics that whenever a electric dipole is suspended in a electric field, it experience a torque. तो उसमें जब हमने देखा था तो वो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या था? टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा. अब उसमें आपका पी क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. E was the intensity of the electric field and theta was the angle between your dipole and your direction of electric field. Now if we compare these two equations, that is the torque acting in the magnetic field and torque acting in the electric field, whenever we compare these two equations, we have a new term, that is magnetic dipole M, which is equal to I into A. I is the current of the loop and A is the area of the loop, and the unit of this magnetic dipole is ampere meter square. Because unit of current हमारे पास क्या होता है? Ampere. Unit of area is meter square. So the unit of magnetic dipole will be ampere meter square. Now if we need to write it in the vector form, we have M vector is equal to IA vector. Now the direction, when we have to find the direction of this magnetic dipole movement, the magnetic dipole movement की जो हमने direction find out करनी है, that we can find using the right hand rule. उसमें हमें क्या करना है? We have to grasp the conductor, the current carrying coil in our right hand and the curling of our fingers. जो हमारी fingers उस direction में curl करेंगी जिस direction में क्या है? Which is the direction of current. If the direction of the current is clockwise, your finger will curl like this, and if the direction of current is anti-clockwise, your fingers will curl like this, and the direction of thumb, where our thumb extends, जिस direction में आपका thumb point करेगा, that will be the direction of the magnetic dipole movement. Okay, now you know the magnetic field at the, हमने पहले आर्टिकल करा है कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कुलर लूप है तो उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2A. अब इस इक्वेशन में से I की वैल्यू क्या हो जाएगी? M by A. Put these values here, you will get B is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 pi 2M upon A cube. Now this is the expression for the magnetic field at the center of the circular loop in terms of magnetic dipole moment. Our next article is magnetic dipole moment of a revolving electron. In this you all know that an electron revolves around a nucleus. Now here we will consider that an electron is revolving around the nucleus in this minute loop, and
the velocity of the electron while revolving is v. Okay students, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है inside the nucleus, it is revolving in a minute loop. अब आपको पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है it is always opposite to the direction of movement of electron. अब यहाँ पे if you can see in this loop, जो इलेक्ट्रॉन है it is moving in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है देन योर करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस आर्टिकल वी हैव स्टडीड कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है एम वेक्टर, हम उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं. विद अवर राइट हैंड रूल वी ग्रास्प द करंट कैरिंग लूप इन अवर राइट हैंड. अब इसमें करंट जो है इट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस. This is the direction of the movement of current and the thumb is pointing downwards, means the magnetic dipole moment M is downward. Now here M is the mass of the electron, E is the charge on electron and the value of current is charge upon time. I is equal to E by T. Now the total time period, यहाँ पे time period क्या है? The time in which the electron covers one revolution, means it moves around the nucleus one times. तो जो पूरा ये revolution है इसमें जो total distance covered है that is 2 pi r. The velocity of the electron is v, so the value of the time period will be 2 pi r upon v. The value of current is here, you can put the value of t. तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? I is equal to ev upon 2 pi r. अब हमें पता है कि जो एरिया हम ले रहे हैं, जो हम लूप ले रहे हैं दैट इज अ सर्कुलर लूप एंड एरिया ऑफ अ सर्कुलर लूप इज पाई आर स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ एरिया विल कम आउट टू बी पाई आर स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई एंड ए इन, हमने किसमें सब्स्टिट्यूट करनी है? लास्ट में हमने एक आर्टिकल करा था दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर किसके इक्वल है? आई इंटू ए. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम दिस and substitute the value of A, you will get EV upon 2 pi r into pi r square. Now here जब हमारी कटिंग हो जाएगी we will get M is equal to EV r upon 2. ये हमारी वैल्यू आ गई M की, that is magnetic dipole moment की. अब हम इसका कंसिडर करेंगे एंगुलर मोमेंटम. अब जो आपका एंगुलर मोमेंटम है that is J वेक्टर. एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब यहाँ पे हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम ई. यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर. नाउ इफ वी डिवाइड एम एंड जे वी हैव एम बाई जे इज इक्वल टू ई बाई 2m. अब E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. M is the mass of electron. Now the value of charge on electron is always fixed. जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, उसका वैल्यू फिक्स रहती है that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. Similarly mass of electron भी always fix है. तो means जब इसकी रेशियो निकालेंगे that will also come as a constant. अब this implies that कि whenever जो इलेक्ट्रॉन है it is revolving around the nucleus, the ratio of the magnetic dipole moment of the electron and angular momentum of the electron is always constant. Next we have a question that can a current carrying solenoid behave as a magnet? अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब भी हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है when it is suspended in a magnetic field, उसमें हमारे पास 2 poles develop होते हैं. जो one side of a solenoid है it will act as a north pole and जो other side of the solenoid है it will act as a south pole and the current carrying solenoid as a whole will always act as a bar magnet. और जब भी आप एक current carrying solenoid को if you tie a thread around it and if you suspend that current carrying solenoid, then that current carrying solenoid will always align with the earth's magnetic field. अगर उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, अगर उस करंट कैरिंग सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह नहीं होगा,
so it couldn't be suspended along the Earth's magnetic field in the rest position. But अगर हम current carrying solenoid को लें, we tie a thread around it, and if we suspend it, it always align with the magnetic field of the Earth. So yes, a current carrying solenoid will always behave as a bar magnet.